स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल फॉर द कैपेसिटिव सर्किट। देखते हैं क्या है अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल। ए कैपेसिटर of 40 microfarad is charged to a potential difference of 500 volt. The charge acquired by the capacitor in coulomb is, ऑप्शन है आपके, पहला ऑप्शन जो है वो है 2.22, अगला है 2, सी ऑप्शन जो है हमारा वो है 0.22 और लास्ट ऑप्शन जो है हमारा 0.02। तो देखते हैं क्या होगा इसका आंसर। So a capacitor of 40 microfarad is charged to a potential difference of 500 volt. The charge acquired by the capacitor in coulomb is. So if you see the formula of the capacitor, Q equals to CB and Q is CB. So C is how much? 40 microfarad, na? 40 microfarad. And how much is your V? That is 500. So it is 20 and we have 3 0. Then 10 की power minus 6. Okay, so if you see so 2030, okay, 20, so we have 2 into 10 की power 4 into 10 की power minus 6, so 2 into 10 की power minus 2 and it is 0.02 coulomb. Let's check the answer. Is there any option? Yes, we have. The correct answer is C. So we have studied all the relation with respect to the capacitor. Okay, next problem देखते हैं। Now the next problem of the capacitor is, which of the following capacitor capacitors will have least energy stored in it. ऑप्शन है आपके, पहला जो ऑप्शन है वो है ए 500 पिकोफैरड कैपेसिटर, 500 पिको कैपेसिटर चार्ज टू 10 kV, चार्ज टू 10 kV। अगला ऑप्शन है आपका बी, जो ऑप्शन है देखते हैं, ए 1 माइक्रोफैरड कैपेसिटर charged to how much kV? 5 kV। अगला ऑप्शन है हमारा सी, 40 माइक्रोफैरड कैपेसिटर charged to charged to 400 volt। एंड लास्ट ऑप्शन जो है all will have the same energy stored, all will have same energy stored, same energy
स्टोर। तो देखते हैं क्या ऑप्शन होगा भाई हमारा। सो इट इज लेट्स चेक द डेटा 500 या 10 kb, 1 microfarad, 5 kb and 40 microfarad, 400 volt. I think this is your data. So it is exact data. Okay. So अगर हम बात करते हैं पहले ऑप्शन की, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है अपने ऑप्शन वाइज सॉल्व करना पड़ेगा, तो ऑप्शन नंबर देखते हैं पहला, ऑप्शन ए ना। तो स्टोर्ड एनर्जी की अगर पहले बात कर लें तो स्टोर्ड एनर्जी होती है कैप्चर में हाफ CV स्क्वायर, ठीक है। सो हाफ सी कितना है 500 पिको 10 की घात -12 हो गए -12, और V कितना है, V है यहाँ पर 10 इंटू 10, और KB का मतलब 10 की पावर 3, तो 10 की पावर 60। तो यहां से देखें, so if you see this thing 12 by 12, 5 10 की पावर -12, 6 8 10, okay, so we will sorry 6 8 10, it is 10 now, so it is 10, and so we have 2.5 into 10 की पावर -2, ठीक है यहाँ तक। So I can write like 0.025 joule. Okay, I just write like that 2.5 into 10 की power -2 joule. So according to first option, this is your answer. Let's check the B option. So in B option where we have half C is how much, 1 microfarad -6, and V is what, 5 kV to 25 into 10 की पावर 6, ठीक है यहाँ तक। तो 6 से 6 तो कैंसिल आउट हो गया, एंड इट इज 12.5 जूल। ओके, नेक्स्ट सी ऑप्शन अगर देखें क्या है हमारा, 40 माइक्रोफैरड 400, सो हाफ सी इज हाउ मच, 40 into 10 की पावर -6, and how much is your voltage, V square, that is 400 into 400, ठीक है। So I think 20 40 2 की 10 की पावर 2 10 की पावर 4 5, so it is 1/2 into 4 into 10 की पावर -6, so 2 power 4 power 5 power, so it is 2 into 10 की पावर -1। okay, so check your option. I think the highest, I think it is lowest or highest, they are asking for the least energy. So the least energy is having in option A. So we have option A, that is if they were asked for the highest, then highest energy is by B. So for the lowest we will choose A, and for the highest we will choose the option number B. Okay, so देखते हैं next question क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक कैपेसिटर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय, एक कैपेसिटर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय, capacitor can be represented by a capacitance and a resistance in parallel, ठीक है यहाँ तक। for a good capacitor, this parallel resistance H
व्हाट आर द ऑप्शन? वेरी वेरी हाई, वेरी हाई, वेरी हाई। नेक्स्ट ऑप्शन है वेरी लो, वेरी लो। अगला ऑप्शन है लो, और लास्ट ऑप्शन जो है हमारा वो है नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। ठीक है यहां तक। सो देखते हैं क्या आंसर होगा इसका। आई थिंक ऐसा हम पढ़ भी चुके हैं और मैंने नोट पॉइंट में आपको बताया भी था। सो अगर हम बात करें आइडियल कैप्चर की, सो इन आइडियल कैप्चर, दिस इज योर आइडियल कैप्चर। सो इफ यू सी द आइडियल कैप्चर, the resistance in parallel is infinite. This is RP is infinite, so that the leakage current is zero. Leakage current. So I'll write proper way. So leakage current is zero. If the capacitor is ideal, then whole of the supply current will be through the capacitor. Okay. But for the practical capacitor, if you see, for the practical capacitor, we are having resistance in parallel with it. Now, to have the low leakage current, what should be the condition? So I leakage equals to V upon RP, and that the leakage resistance, exactly it is called leakage resistance. Either it is asked for the capacitance, it is asked for the dielectric, it is also valid for the insulator diagram. So please ध्यान रखिएगा, प्रैक्टिकल कैपेसिटर, डाइलेक्ट्रिक और अगर इंसुलेटर की बात करें या केबल की बात करें तो तीनों के डायग्राम क्या होते हैं? सेम होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। सो टू हैव द मिनिमम करंट, दिस शुड बी वेरी वेरी हाई। सो in general, this RP for ideal capacitor, if you take RP for ideal capacitor, for ideal, RP should be infinite. But for the practical reason, for the practical purpose, RP should in mega ohm, sorry, it is in mega ohm. So let's check the answer. So it should be very very high. ठीक है यहाँ तक। So this is the answer number A. आगे बढ़ते हैं हम। लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, a capacitor has two। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा कंडक्टर सेपरेटेड बाय डाइलेक्ट्रिक, कंडक्टर्स separated by a dielectric, नेक्स्ट ऑप्शन जो है हमारा वो देखते हैं क्या है, इंसुलेटर सेपरेटेड बाय ए कंडक्टर, इंसुलेटर सेपरेटेड बाय ए कंडक्टर। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, two insulator separated by separated by air medium only, and last option है हमारा, there is two conductors only, ठीक है यहां तक। सो देखते हैं। सो हमारा नेक्स्ट
क्वेश्चन है इफ कैपेसिटर है, कैपेसिटर के अंदर क्या क्या होता है। सो अगर हम बात करें कैपेसिटर की, तो हमारा कैपेसिटर का जो डायग्राम होता है वो ये होता है, ये रहा हमारा कैपेसिटर, ये रही, दिस इज योर सप्लाई, दिस इज द प्लेट्स, दिस इज पॉजिटिव प्लेट and this is the negative plate. Now when they are having charge, that means they are the conductors, कंडक्टर्स होंगे ना अगर चार्ज है, और दो कंडक्टर जो है वो एक दूसरे से दूर रखे हुए हैं, उनमें कोई भी कंडक्शन नहीं हो रहा, दैट मीन्स दे आर नॉट टचिंग ईच अदर, दैट मीन्स in that region we have dielectric. okay, so दो कंडक्टर को हम क्या करते हैं, डाइलेक्ट्रिक से दूर करते हैं। ऐसा ही अगर मैं और डायग्राम देखूं आप, सो इफ यू सी योर पावर सिस्टम में अगर हम देखें, एग्री, सो इन पावर सिस्टम वी हैव three wires, this is red, yellow, blue, these are the conductors, red, yellow, blue conductor, and in between that air is behaving as a dielectric, air is behaving as a dielectric. okay, so we are having two conductors for the single phase system, or for the single phase system we are having two conductors and or metals, in between that we have a dielectric. So let's check the answer. Two conductors only, wrong. Insulator separated by conductor, it is just opposite, wrong. Two insulators separated by, wrong. So the correct option, two conductors separated by a dielectric. So option A should be correct. देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द कैपेसिटर्स। So we are having the next question. So what is that? Now our last question, sorry, we have two more questions on that. So let's see the question number next. A pure capacitance, a pure capacitance, a pure capacitance connected across a pure capacitance connected across 50 hertz 230, it is comma 230 volt supply, 230 volt supply consumes 0.04 watt. Okay, this consumption is attributed to, हमारे ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है ओमिक लॉसेस ड्यू टू ओमिक रेजिस्टेंस ऑफ प्लेट, ड्यू टू ओमिक रेजिस्टेंस ऑफ प्लेट्स। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं क्या, नेक्स्ट ऑप्शन जो है लॉस ऑफ एनर्जी इन डाइलेक्ट्रिक, बी ऑप्शन जो है लॉस ऑफ एनर्जी इन डाइलेक्ट्रिक। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा सी, द नेक्स्ट ऑप्शन इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस इन ओम, कैपेसिटिव reactance in ohm, and the last option is both ohmic loss due to
ohmic loss due to ohmic resistances of plates and loss of energy in dielectric ठीक है, यहां तक देखते हैं कि ऑप्शन सही होगा हमारा। सो क्वेश्चन क्या, एक प्योर कैपेसिटर इज कनेक्टेड 50 हर्ट्ज टू 30 वोल्ट सप्लाई कंज्यूम्स 0.04 वाट, दिस कंजम्पशन इज एट्रीब्यूटेड। अगर हम बात करें आइडियल कैपेसिटर की, तो अगर आइडियल कैपेसिटर की बात करें, आइडियल कैपेसिटर में तो जो पी एवरेज होता है वो क्या होता है, 0 होता है। तो ये तो आंसर 0 सॉरी, जो कंजम्पशन है वो 0 वाट होना चाहिए, बट इसमें जो पी एवरेज है वो 0 नहीं हो रही है, तो दैट मींस फॉर प्रैक्टिकल कैपेसिटर द पी एवरेज इज नॉट 0, पहली बात। ठीक है, अब जो आइडियल कैपेसिटर है वो आपने इसका डायग्राम पढ़ चुके थे, ये था। ठीक है, अब मैं प्रैक्टिकल कैपेसिटर का अगर मोर प्रिसाइज डायग्राम बनाया जाए तो देखो क्या होगा। एक तो प्लेट्स हैं और प्लेट्स का इंटरनल कुछ रेजिस्टेंस होता है, क्योंकि ये कंडक्टर्स की तरह बिहेव करते हैं, स्मॉल आर, और एक रेजिस्टेंस होता है आपका पैरेलल में। ठीक है, होता है। तो एग्जैक्ट जो डायग्राम होता है कैपेसिटर का वो होता है ये वैल्यू जो होती है वो मेगा ओम में होती है, और ये बहुत छोटी होती है, स्मॉल होती है। ठीक है, अब जो एग्जैक्ट पावर खत्म होती है, दिस एवरेज पावर is consumed by 3%. First in parallel resistance, in the form of leakage. It is called leakage current due to leakage. Okay, then it is in plate resistance, and the third part is what, in dielectric also, because no dielectric is perfect. ठीक है, तो ऑप्शन चेक कर लीजिए कौन सा होगा। ohmic losses due to the ohmic resistance of plates, no, we have 3% that are consuming such amount of power, so loss energy in dielectric, no, it is separating capacitive reactance, ये तो बिल्कुल बात गलत हो गई, ये तो बिल्कुल गलत बात है। नेक्स्ट देखें, both ohmic losses due to the ohmic resistance of plates and loss of energy, yes, it is more appropriate to have the डी ऑप्शन। ठीक है, यहां तक। सो बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द कैपेसिटर इज, इफ ए कैपेसिटर इज, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, इफ ए कैपेसिटर इज charged by, if a capacitor is charged by a square wave current source, the voltage across the voltage across the capacitor is, फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका वो है स्क्वायर वेव, अगला जो ऑप्शन है वो है आपका ट्रायंगुलर वेव, और सी ऑप्शन जो है स्टेप फंक्शन। ठीक है, और डी ऑप्शन जो लास्ट है हमारा 0, इट इज 0। तो देखते हैं क्या इसका सॉल्यूशन होगा। The capacitor is charged by a square current wave, and what is the voltage across the capacitor? Okay, now let's see the solution. Now, if capacitor is having a current source of a square na, it is a square wave. Okay, this is a waveform of IT. Now, what is the C, and it is VC. So IC is C dV over dt. Okay, now what is the equation of current? Equation of current for the, it is square, suppose it is V value, suppose it is of I value,
it is of I value. I means 1 ampere, 2 ampere, whatever. Okay, so I value, that is constant value. Okay, so what is the capacitor value? So dV upon dt is equals to IC by C. From this, the dV is equals to IC upon C. Now you integrate on both sides, then you have Vt, the capacitor voltage is 1 by C IC into dt. Okay, now put the value of I. Put the value of I. Then it is I dt. Now if you integrate, because I is constant, then it is C and 1 into dt. It is 1 into dt. It is dt. So the integration of 1 with respect to t is what? T. So it is I by C into T. So this is the voltage across the capacitor. Now check the option first. Square wave not possible, because if you integrate square, that will be a ramp. So option A is wrong. Then if you have a triangular, then we will, let's see. If step function, and if you solve this step function waveform is like that. The B option is this step function. Step function is defined as ut is 1 when t is greater than or equals to 0 and 0 when t is less than 0. So it is not satisfying the value, because when t is 0, it is 0. Okay, so B option is, sorry, C option is also wrong, and 0 not possible. So option remaining is what? That. So if you draw this thing, if you draw this waveform Vc versus t, then it is like that. Like that. Just charge, discharge, charge or discharge. So your B option is correct. Take the next question related to the capacitor circuit. Now let's check the question on the capacitive circuit. Okay, so we will have the last question on the capacitive circuit is, what is that? I hope so. Where is the question? Now the last question for the capacitive circuit. After that we will see the comparison of all these things. So last question of the capacitive circuit is a voltage of 50 sine 1000 t volt is applied across a parallel plate capacitor. Parallel plate capacitor. Okay, with plate area of 5 centimeter square and plate separation gap and the plate separation gap of 5 mm. Okay, if the dielectric material in the capacitor has epsilons is 2 epsilon naught, which equals to this, then the capacitor current in ampere will be. Let's take the option. So हमारा पहला ऑप्शन है
10 की पावर 4 डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एंड इट इज cos 10 की पावर 3t। नाउ बी ऑप्शन जो है हमारा वो है एप्सिलॉन नॉट 10 की पावर 4 cos 10 की पावर 3t। अगला जो ऑप्शन है हमारा वो है 10 की पावर 4 एप्सिलॉन नॉट देन sin 10 की पावर 3t। और लास्ट ऑप्शन जो है हमारा डी वो है एप्सिलॉन नॉट 10 की पावर 4 sin 10 की पावर 3t। ओके, सो देखते हैं क्या ऑप्शन होगा इसका। सो वी विल सी द so a 50 volt voltage source. Okay, so let's see a diagram first. This is your voltage is what? Vt is equals to 50 sin 1000 t. That is also written as V angle 0 degree. So it is 50 divided by root 2 angle 0 degree. Okay, then what is the formula of capacitance? So C is what? Epsilon naught A upon D. If you remember the parallel plate capacitor formula, okay. Then now if you want to solve the capacitive current, then I need I equals to C dV by dt, and the next way to solve the question is I equals to V upon XC. So by both method we can solve this current. So let's think what is easy. Okay, that's a problem. So यहां पर हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं यहां पर क्या है। तो सबसे पहले तो हमें सॉल्व करना पड़ेगा कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस देख लेते हैं, C बराबर एप्सिलॉन नॉट और मटेरियल की जो रिलेटिव परमिटिविटी है वो कितनी दे रखी है 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहां तक आगे अगर हम बात करें सो C ये हो गया आपका और एप्सिलॉन A इज हाउ मच? A the plate area is 5, so 5 into 10 की power -4 because in meter. Okay, the gap is epsilon naught A and D is what? D is 5 mm. So 5 into 10 की power -3. So it is a value of capacitance. Okay, now what is the voltage? So let's differentiate first. Then IC equals to C. C is this 2 epsilon naught square into 5 into 10 की power -4 upon 5 into 10 की power -3, and let's take the differentiation of sine. So we will take the differentiation of sine 50 sin 1000 t. Okay, so this is the differentiation. Okay, now so अगर हम बात करें तो it is 10 into 10 की power -4 into epsilon naught square into 5 into 10 की पावर -3 और 50 को बाहर ले लेते हैं। तो 50 को अगर हम बाहर ले लेते हैं तो देखते हैं क्या होता है। तो 50 को तो बाहर ले लेंगे, साइन क्या करेंगे cos 1000t और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 1000। ठीक है, यहाँ तक होपफुली ये बात क्लियर समझ में आ गई होगी आपके। तो 3 पावर यहाँ से आ जाएंगे और 1 पावर यहाँ से आ जाएगी और 1 पावर यहाँ से आ जाएगी। 3 4 5 3 4 5, so it is 10 की पावर 5 into 10 की पावर -4 एप्सिलॉन स्क्वायर। ठीक है यहाँ तक, और 5 से 5 एक कैंसिल कर देते हैं। ठीक है यहाँ तक, और अगर हम बात करें तो ये जो पावर है ऊपर आएगी तो प्लस की हो जाएगी और ये हमारा आंसर आएगा इट इज cos 1000t। ठीक है यहाँ तक, ऑप्शन हमारे कोई है cos में? यस, वी हैव 2 ऑप्शन इन cos. लेट्स सी what is the value of that. Now if you see this whole thing, then it is 8, just 8 minus 4, that is 10 की power 4 epsilon square cos 1000t. So this is the value of capacitance. Okay, sorry, current through the capacitance. अब हम ऑप्शन चेक कर लें। अगर हम ऑप्शन की बात करें तो साइन वाले तो ऑप्शन जो है वो 101% रॉन्ग होंगे। सी रॉन्ग,
डी रॉन्ग। अब हमारे ऑप्शन बचे ए और बी, ठीक है। तो आई थिंक देयर इज ए मिसप्रिंट इन द ऑप्शन। लेट मी कंफर्म फर्स्ट इट इज मिसप्रिंट और नॉट। Yeah, there is a misprint in your question, in misprint in your option, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं क्योंकि हमारा जो वैल्यू दे रखी है वो एप्सिलॉन की वैल्यू, जो रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द कैप्चर इज 2 टाइम ऑफ एप्सिलॉन नॉट, ठीक है यहां तक। या अगर हम बात करें कैप्चर हैज, अगर हम रिलेटिव परमिटिविटी को 1 कर देंगे देन यू विल गेट ऑप्शन। इफ यू अज्यूम दैट योर कैप्चर इज इन, लेट्स एक बार कंफर्म और कर लेते हैं। अगर हम इस क्वेश्चन में एक चीज देखें यहां पर, अगर हम रिलेटिव परमिबिलिटी को क्या कर देते हैं 1 कर देते हैं, क्या कर देते हैं 1 कर देंगे, ठीक है यहां तक। अगर हम रिलेटिव परमिबिलिटी को क्या कर देंगे 1 कर देंगे, देन वी विल हैव जस्ट दिस फैक्टर 1 एंड दिस इज 1। लेट्स सी, इट इज 1 1, इट इज 1 1, देन वी आर गेटिंग ऑप्शन। सो जस्ट चूज एयर एज डाइलेक्ट्रिक, ओके डाइलेक्ट्रिक, ठीक है यहां तक। सो अब चेक कर लीजिए कौन सा ऑप्शन है। सो हमारा ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर बी, बिकॉज 10 की पावर 4 एप्सिलॉन नॉट cos की पावर cos 10 की पावर 3 t। या वी आर गेटिंग द करेक्ट आंसर। सो वी आर हैविंग बी ऑप्शन इज करेक्ट। सो अब तक जो हमने पढ़ा, रेजिस्टिव सर्किट पढ़ लिया, प्योरली इंडक्टिव सर्किट पढ़ लिया, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट पढ़ लिया। इसकी समरी बना लेते हैं कि इनसे रिलेटेड क्या क्या और क्वेश्चन हो सकते हैं जो अगर आप किसी एग्जाम में जाएं तो बहुत जल्दी रिवाइज कर पाए। सो अब हम देखेंगे इसका कंपैरिजन क्या है, प्योरली रेजिस्टिव, प्योरली इंडक्टिव और प्योरली कैपेसिटिव सर्किट का न्यूमेरिकल काफी हो चुके हैं आई थिंक, बाकी आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। तो अब हम कंपैरिजन करते हैं इनका। सो लेट्स स्टार्ट द कंपैरिजन।